হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। তো এখন কথা বলবো ধনুষের আপকামিং মুভি ধীরু চিত্রাম্বলম। আশা করছি নামটা ঠিকঠাক নিয়েছি, অনেকটা জটিল ছিল প্রোনাউন্স করতে গিয়ে। তো এই মুভিটার ট্রেলার কিন্তু একটু আগে সান পিকচার্স ইউটিউব চ্যানেলে এসে গেছে। তো চলো আগে দেখে নেওয়া যাক মুভিটার ট্রেলারটা কীরকম হলো, তারপরে কথা বলবো তোমাদের সাথে ট্রেলারটা নিয়ে। ரெடி ஆயிடுச்சு. எவ்வளவு நேரம் கத்துறது? வந்து வாங்கிட்டு போயா. என் லைஃப் ரொம்ப சிம்பிளான லைஃப். 9 to 6 வீக் டேஸ் ஃபுல்லாக வேலை, வீக்கெண்ட்னா ஏதோ ஒரு சினிமா, டிவி, நெட்ஃப்ளிக்ஸ்னு ஒரு சாதாரண வாழ்க்கை. வரும்போது 4 பீர் பாட்டில் வாங்கிட்டு வா. நீ போய் வாங்கிட்டு வரலாம்ல. உன் வேலையே அதான்டா, வாங்கிட்டு வா. இவன் தான் என் தாத்தா. எனக்கும் என் தாத்தாக்கும் ஒரே பேர். பழம். ஹாய் பழம். பழம். அது என்ன பழம்? திருச்சிற்றம்பலம் என் பேர். ஹண்டர் வால்டர் வெற்றிவேல், இவருக்கு போய் தான் உலகத்தை காப்பாற்றணும். யோ பழம், மேல என்ன ஒரே சத்தம்? உள்ள பேரனை அடிச்சு விட்டேன். சோபனா என் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு, சின்ன வயசுலேருந்து என் ஃப்ரெண்டு. சோபனா ஐடியா தான் கொடு சோபனா. நான் அங்க வெயிட் பண்றேன். அப்படிதான் லவ்னா உனக்கு என்னன்னே தெரியாது. லவ்னா ஹாய் பழம். ஐ லவ் யூ சொன்னாளா? கிஸ் அடிச்சிங்களா? சார் சொன்னா என்ன, இந்த இடத்துல இப்படி ஒரு கிஸ் கொடுத்தா. ஐ லவ் யூ. விளங்குங்கிற? கண்டிப்பா இது விளங்காது. அவனை ஒழுங்கா வெளியே போய் எங்கேயாவது பழக்க சொல்லு. வாஸ்தவமே என்ன ஹீரோ யா எப்படி ஃபைட்டு? நம்ப முடியலடா. நம்ம தான் நம்மள ரொம்ப கம்மியா நினைக்கிறோம்னு நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலா நம்ம ஒரு ஆள் தான் நினைக்கிறேன். இப்போ அவன் என்ன பண்ணுவான்? சோகமா இளையராஜா பாட்டு கேட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருப்பான். ধনুষকে আমরা এতদিন ধরে অনেক সিরিয়াস মাস অ্যাকশন টাইপ রোলে এরকম ফিল্মে আমরা দেখে এসেছি, বাট এই ফিল্মটা কিন্তু কমপ্লিটলি একটু আলাদা হতে চলেছে। এই ফিল্মটার মধ্যে কমেডি থাকবে, রোম্যান্স থাকবে, অ্যাকশন টুকটাক দেখতে পেলাম, বাট আমার মনে হয় এই ফিল্মটায় সেরকম ভিলেন কেউ থাকবে সেরকম নয়, হবে না খুব সম্ভবত। এটা হয়তো একটা কমেডি লাভ স্টোরি হতে চলেছে। তো ফিল্মটার মধ্যে 3টে নায়িকা আছেন, যার মধ্যে 2জনকে আমি চিনি, 1জনকে আমি চিনি না। তো এখানে নিত্যা মেনন হচ্ছে ধনুষের বন্ধু ছোটোবেলা থেকে। তো এবার ধনুষ এখানে একটা ডেলিভারি বয়ের ক্যারেক্টার প্লে করছে। তো ট্রেলারটা দেখে বেশ আমার একটু কমেডি, বেশ একটা ফান লাভিং টাইপ লাগলো, যে এখানে ধনুষ কীভাবে এখানে রাশি খান্নাকে প্রপোজ করবে বা চেষ্টা করবে বা তার রিলেশনশিপে যাবে কিনা, এইসব জিনিসপত্রগুলো বিস্তার দেখাবে এবং তার লাভ লাইফটাও সাকসেসফুল হবে কিনা সেটা ফিল্মটা আসলে বুঝতে পারবো। এবং মিউজিক ডিরেক্টর অনিরুদ্ধ, তো নিঃসন্দেহে গান আর বিজিএমএ ফিল্মটা তো জবরদস্ত হতেই চলেছে। তার সাথে ধনুষ আছে এবং বাকি ভালো ভালো পারফর্মার্স আছে ফিল্মটার মধ্যে। তো ট্রেলারটা দেখে বেশ আমার কিন্তু মিষ্টি লাগলো, ধনুষকে একটু লাইট রোলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, সেই জিনিসটা দেখে বেশ ভালো লাগছে। এবং তার সাথে 3টে নায়িকার সাথে কেমিস্ট্রি কীরকম হতে চলেছে সেটাও দেখার ব্যাপার। প্রকাশ রাজ আছে, তো তার ক্যারেক্টারটা কিন্তু অ্যাজ ইউজুয়াল স্ট্রিক্ট এখানে দেখালো। তো এবার দেখা যাক কী হয়, ফিল্মটা আসলে বোঝা যাবে কীরকম আমরা গল্প পেতে চলেছি। ধনুষের লাইফ নিয়ে এখানে হতে চলেছে, তো তার লাভ স্টোরি কীরকম হবে, তার ডেইলি লাইফ কীরকম হয় সেটাই দেখাবে। স্লাইস অফ আ কমেডি ফিল্ম হয়তো হতে পারে, যেটা আমার ট্রেলারটা দেখে মনে হলো। তো 18th অগস্টে ফিল্মটা আসছে, তো দেখা যাক ফিল্মটা কীরকম হয়। তোমরা যদি ট্রেলারটা দেখে থাকো অবশ্যই জানিও তোমাদের কেমন লাগলো, এবং যদি এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে লাইক করে দিও, শেয়ার করে দিও, চ্যানেলটা কিন্তু অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবে, নোটিফিকেশন বেলটাও কিন্তু অল করে দিও। তা দেখা হবে পরের ভিডিওতে। বা